Welcome back in our herbal medicine training course. प्रीवियस जो हमारी एपिसोड थी उसमें हमने हिस्ट्री को जानने की कोशिश की कि जो ये हर्बलिज़म है ये किस किस फेज से ट्रांजिशन होके मॉडर्न एजेस तक हमारे पास। आज इस ही कॉन्सेप्ट को मज़ीद थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम लेके जाते हैं कि जो ट्रीटमेंट हमारे पास हर्बल्स अवेलेबल हैं बुक्स में, हिस्ट्री में, वो हैं कौन कौन सी। उनमें सबसे पहले हमारे पास आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स आती हैं और आयुर्वेदिक फ्रॉम इंडिया। उसके बाद यूनानी मेडिसिन फ्रॉम ग्रीक अरेबिक ट्रेडिशन और ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन फ्रॉम चाइना, वेस्टर्न हर्बलिज्म फ्रॉम यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। Although these systems developed in different parts of the world, they share one common belief. इनमें एक चीज़ common थी, nature contains powerful remedies that can support health and restore balance. अब हम अपना जर्नी लर्निंग का कंटिन्यू करते हैं, जिसमें सबसे पहले एरोवेदा आता है, साइंस ऑफ लाइफ इसको कहा जाता है। और एरोवेदा इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट हीलिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड. It originated in India more than 5,000 years ago and remains widely practiced today. आज तक भी ये बहुत सी चीज़ें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स जो हैं वो बिलीफ में हैं और प्रैक्टिस में हैं. The word Ayurveda comes from Sanskrit word Ayur mean life and Veda meaning knowledge. Together Ayurveda means the science of life. और मॉडर्न मेडिसिन्स की से हट के, अनलाइक द मॉडर्न मेडिसिन विच ऑफन फोकस ऑन द ट्रीटिंग डिजीज़, जो जितनी मॉडर्न मेडिसिन हैं वो डायरेक्ट डिजीज़ को ट्रीट करती हैं, आयुर्वेदा फोकस ऑन मेंटेनिंग बैलेंस एंड प्रिवेंटिंग इलनेस बिफोर इट अकर्स. तो ये एक प्रिवेंटिव वे ऑफ लाइफ कि आप बीमार ही ना हो ऐसा लाइफ स्टाइल आप करें. अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदा द हेल्थ डिपेंड ऑन हार्मनी बिटवीन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट. इन चीज़ों का, तीनों चीज़ों का अगर आप बैलेंस रखते हैं, व्हेन दीज थ्री एस्पेक्ट्स बैलेंस्ड, अ पर्सन एक्सपीरियंसेस वेलनेस एंड वाइटैलिटी. According to Ayurveda, every human being is governed by three vital energies known as doshas. Vata controls movement, Pitta controls transformation and metabolism, while Kapha provides structure and stability. और थ्री दोशाज इसमें बहुत कॉमन हुए. Ayurveda teaches that every individual is governed by three biological energies known as doshas. These doshas influence personality, digestion, body structure, emotions and overall health. जिसमें पहला दोषा है वाटा. वाटा मेड ऑफ एयर प्लस एथर मीन स्पेस. आपके इर्द गिर्द जितनी स्पेस है. वाटा कंट्रोल्स मूवमेंट थ्रू द बॉडी. दिस इंक्लूड ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन, नर्व सिग्नल्स, movement of muscles. People with dominant vata energy are often creative, energetic and quick thinkers. नेक्स्ट आ जाता है पिटा दोशाज. अब वो क्या चीज़ है? पिटा इज़ मेड अप ऑफ फायर प्लस वाटर. पिटा गवर्न्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड मेटाबॉलिज्म. जो इंसानी जिस्म में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, मेटाबॉलिज्म इज कंट्रोल डाइजेशन, बॉडी टेम्परेचर और हार्मोनल फंक्शंस और मेंटल शार्पनेस. इंडिविजुअल्स विद स्ट्रॉन्ग पिटा टेंड टू फोकस इंटेलिजेंट एंड नेचुरल लीडर्स. काफा दोशा. Kapha consists of earth plus water. Kapha provides structure, stability and nourishment. It supports body tissues, joint lubrication, strength, immunity. People with dominant Kapha are calm, patient and dependable. और common Ayurvedic herbs कौन कौन सी हैं? Some of the most famous Ayurvedic herbs include ashwagandha, known for stress management and vitality. तुलसी, ये होली बासल भी इसको कहते हैं, ट्रेडिशनली यूज्ड फॉर रेस्पिरेटरी एंड इम्यून सपोर्ट. टर्मेरिक, वैल्यूड फॉर इट्स एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज. नीम, और ये
کلینزنگ میں اور اسکن ہیلتھ کیئر وغیرہ میں یہ وائڈلی یوز ہوتا ہے. دیز ہربس کنٹریبیوٹ ٹو بی اسٹڈیڈ اینڈ یوز اراؤنڈ دی ورلڈ ٹوڈے. یہ بھی آج تک بھی آپ کے استعمال میں ہے. نیکسٹ آتا ہے یونانی میڈیسن. نیکسٹ وی ٹریول ٹو دا ورلڈ فار یونانی میڈیسن. یونانی میڈیسن از اے ٹریڈیشنل ہیلنگ سسٹم دیٹ کمبائن نالج فرام اینشنٹ گریک, عرب سویلائزیشن, پرشین میڈیسن. اور اب اس کا مطلب کیا ہے یونانی؟ دی ورڈ یونانی مینس گریک. اٹس فاؤنڈیشن were laid by ancient Greek physicians and later expanded by Arab scholars and Muslim scientists during the Islamic Golden Age, جو پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہوئے. اور جو یونانی پریکٹیشنر ہیں ان کا بلیف یہ تھا health depends on maintaining balance with the body. آپ اس کو بیلنس میں رکھیں. They developed sophisticated approaches for nutrition, herbal remedies and lifestyle management. Common یونانی herbs اس میں Senna, traditionally used for digestive support. Fennel, commonly used for digestive and comfort. Licorice, valued for soothing properties. Black seed, one of the most famous herbs in the traditional medicine. Many of these herbs remain important in herbal formulation today. یہ day to day میں آپ دیکھتے رہتے ہیں یہ ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں. Third one is the traditional Chinese medicine, TCM اس کو کہا جاتا ہے. اب ہم چائنا کے اس ایرا کو ڈسکس کرتے ہیں. ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن آفن کالڈ TCM ہیز ایوالوڈ اوور تھاؤزنڈز آف ایئرس اینڈ ریمینز ون آف دا ورلڈز موسٹ انفلوئنشیل میڈیکل سسٹمس. اور ماڈرن میڈیسن سے ہٹ کے which often focuses on specific organ, TCM views the body as an interconnected energy network. جی یہ چائنیز جو ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن TCM میں ایک کانسیپٹ آف چی ہے. تو اب بیسیکلی کیا ہے, ایٹ دی ہارٹ آف TCM از دی آئیڈیا آف چی. چی از آفن ڈسکرائبڈ ایز لائف انرجی اینڈ اکارڈنگ ٹو TCM chi flows through body and sustain life. When chi flows smoothly, health is maintained. When chi becomes blocked or unbalanced, illness may develop. تو یہ وہ چائنیز کانسیپٹ ہے. اس کے بعد yin and yang. اب یہ دوسرا ان کا کانسیپٹ ہے چائنیز میڈیسنز میں. Another central concept is yin and yang. These represent opposite yet completely forces. Example include hot and cold, light versus dark, activity and rest. Health exists when yin and yang remain in balance. Hot اور cold کا balance, light and dark کا balance, activity اور rest کا balance. اس کے بعد meridians. TCM also teaches that kai travel through pathways called meridians. kai کہاں سے travel کرے گا؟ These pathways connected different parts of the body and are important in therapies such as acupuncture and herbal medicines. اور acupuncture آپ سمجھتے ہیں بہت سے پرابلم, نروز کے پرابلم ان کو ایڈریس کرتا ہے. Common TCM herbs: ginseng associated with energy and vitality, astragalus traditionally used for immune support, ginger commonly used for digestion and circulation, and cinnamon valued for warming properties. These herbs are now recognized worldwide and frequently appear in modern supplements. Fourth one, Western herbalism. Let's finally explore Western herbalism. Western herbalism medicine developed primarily in Europe and later expanded through North America. Or modern Western herbalism combine traditional knowledge with the scientific research. اور ancient system میں کیا ہوتا تھا, which focus on the energy balance. Western herbalism emphasis on clinical herb actions or evidence-based use, support for specific organ and body system. اب اس کی examples میں some herbs may be used for support digestion, other may be used for respiratory system, some may help maintain healthy circulation. اور یہ ساری کی ساری سائنٹیفک اپروچ ہیز ہیلپ انٹیگریٹ ہربل میڈیسن انٹو ماڈرن ہیلتھ کیئر ڈسکشنز. اب ہم اگر لیکچر کو سمرائز کریں تو وٹ وی ہیو ایکسپلور ٹوڈے,
We have explored 4 major herbal traditions around the world. Ayurveda, which teaches balance through the 3 doshas, Vata, Pitta and Kapha. Unani medicine combine Greek, Arabic, Persian healing knowledge. Traditional Chinese medicines focus on Kai, Yin Yang balance and meridians. Or Western herbalism combine traditional plant knowledge with the modern scientific evidence. तो आपने ये सारी फिलोसफी आपके सामने आ गई. although each system has its own philosophy, they all share the common goal. इनका common goal क्या है? To promote health, restore balance and harness the healing power of nature. तो नेचर से उसको फ़ायदा उठाना. तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर को हमने समराइज़ किया. तो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल एक्सप्लोर how medicinal plant actually work and discover active compounds responsible for healing effect. जो हमारा actual topic है उसमें इंशाल्लाह हम आगे आते जाएंगे. Until then, stay curious, keep exploring the fascinating world of herbal medicine. Thank you for listening.